questions, comments, corrections, additions, subtractions, chastisements, quarreling? Do we have a microphone? Yes. I will speak Hindi. Somebody can translate for you into English. Somebody can translate for Mataji. So I will speak Hindi, English both. Okay. But you understand English? No. See, whatever I say, it will go in some channel. I see. Okay. So, तो ये जहाँ जो साक्षी गोपाल की कथा है, ये लोगों के मुख से नित्यानंद प्रभु ने सुनी. Nityanand Prabhu heard this story of Sakshi Gopal from the local people. सही कथा कहे, and Nityanand Prabhu is repeating the same कथा. Nityanand Prabhu जो है उसी कथा को दोहरा रहे हैं और प्रभु सुने महासुखे, and Lord Chaitanya is hearing with great pleasure. So this is a great lesson, great instruction we have to hear. And Nityanand Prabhu is repeating whatever he heard, he is repeating. तो नित्यानंद प्रभु जो है उसी को दोहरा रहे हैं जो उन्होंने सुना, और चैतन्य महाप्रभु उसी को सुन रहे हैं जो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं. Lord Chaitanya is hearing whatever Nityanand Prabhu is saying, and he is enjoying hearing Krishna Katha. तो previously Lord Chaitanya spoke Katha of Gopal, Madhavendra Puri Gopal. So he enjoyed speaking Krishna Katha. Now he is enjoying listening Krishna Katha. So both are in both enjoyment, both ways. Lord Chaitanya is enjoying. Whenever he gets opportunity to speak, he enjoys. Whenever he gets opportunity to hear, he enjoys. So this is the real enjoyment. This is the enjoyment of spiritual world. तो ये आध्यात्मिक जगत का ये असली आनंद है. And whenever we go to spiritual world, this is only our business. तो भगवान जब हम चैतन्य हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो यही हमारा एकमात्र कार्य है. वहाँ पर और कोई बिजनेस नहीं है और कोई व्यापार नहीं है. किसी प्रकार को व्यापार नहीं है कि घर को चलाना है, we have to maintain the house or we have to maintain some other business. तो आध्यात्मिक जगत में कोई दूसरा कार्य नहीं है कि आपको जो है कुछ व्यापार चलाना है या अपना घर चलाना है. कोई व्यापार नहीं. Only this is the business. So this is the real enjoyment. Lord Chaitanya came in this material world to give this sample. This is the real sample of enjoyment. Lord Chaitanya is enjoying. और लोग मुखे जो local people, the local people, whatever they say, Lord Nityanand Prabhu is hearing. So at that time, local people were not ordinary people. They did not make some addition, some subtraction. They have some special realization. So they are also very authoritative. तो भगवान नित्यानंद प्रभु जो है उनसे जो सुन रहे हैं कथा, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, तो वे भी जो है सामान्य लोग नहीं थे कि कुछ बात को वो जोड़ेंगे, कुछ बात को घटाएंगे, बल्कि उनका स्वयं अनुभव था, है ना. तो लॉर्ड जगन्नाथ and Lord Sakshi Gopal, they have some disagreement. And Lord Jagannath says that this boy has come from Vrindavan and he is accustomed to stealing everything. So he steals. Lord Jagannath, he accepts with the process, the standard process. When you offer Lord Jagannath, you chant the proper mantras, then he will accept. But Sakshi Gopal, he is accustomed to stealing. So he does not need any process that somebody has to chant the mantras, and he steals. So Lord Jagannath is very dissatisfied. तो भगवान जगन्नाथ जो है बहुत जो है इससे जो है वो हो गए, असंतुष्ट हो गए, क्योंकि साक्षी गोपाल ये जो है आए वृंदावन से और इनकी तो आदत है चोरी करने की. तो इनको कोई आवश्यकता ही नहीं कि कोई जो है विधि पूर्वक कोई मंत्र का उच्चारण करेगा तभी वो जो है ग्रहण करेंगे. वो तो चोरी कर रहे हैं. तो लॉर्ड जगन्नाथ, तो ये है प्रेम कला है. प्रेम कला है. लॉर्ड जगन्नाथ wants that Sakshi Gopal is whatever he is doing, so
So it is pleasure of Lord Jagannath. But externally, he criticizes Sakshi Gopal, but internally, he is very satisfied, Lord Jagannath. This is called Prem Kala. तो प्रेम कलह का मतलब यही है, ऊपर से आप विरोध करते हैं, अंदर से आप संतुष्ट होते हैं. आप ऊपर से निंदा कर रहे हैं, मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ ऊपर से, अंदर से आपके प्रति मैं बड़ा संतुष्ट हूँ. तो दिस इज कॉल्ड प्रेम कला. तो लॉर्ड जगन्नाथ wants let Sakshi Gopal should purify other place, because in one place Sakshi Gopal and Jagannath both are there, then they are not benefiting the whole world. तो जगन्नाथ और साक्षी गोपाल एक साथ रहेंगे तो शुद्धिकरण का जो स्थान है वो फिर जो है कम ही रहेगा. तो लॉर्ड जगन्नाथ वांट्स साक्षी गोपाल go to further place so that the other people, the places, the people of other places will be benefited. So Lord Jagannath wants Sakshi Gopal should leave this place. So this is called Prem Kala. In the externally we show our dissatisfaction, but internally we are very much satisfied. This is called Prem Kala. Hare Krishna. Yeah, no need to translate. Anybody else? Thank you.